So good morning, everyone, and welcome to the morning con call. We'll start with technical and derivative updates first. So what we saw yesterday is Nifty did open with a sharp downtick for the second consecutive day. But yesterday, the bears had a total grip on the market, and we saw some gradual moves on the lower side throughout the day. And the selling got intensified in the last half an hour of trade, where Nifty did lost over 100 points in a very short span of time. And we did make a low of 16031. So we did held the 16050 levels on the closing basis, but we did close lower by almost a percentage worth of losses. Yesterday, even the sectoral indices almost had a negative clean sweep, barring Nifty Reality, which closed flattish. All the other major indices closed in the negative note, with auto, FMCG, IT, media, and metals all closing lower by a percentage point. So yesterday we did enter the gap area of 7th July, and we partially filled that gap area, but 20 watts point of gap is still open. So the 16011 and 16031. This gap area is very crucial for the bullish momentum to continue in the near term. So if we hold 16,000 levels on closing basis, then we may go and retest 16,200, 16,300 in a week's time. But if we break 16,000, then we may see further retest of 15,800, 15,700 going forward. Even on the Bank Nifty front, what we saw is that we did open on a negative note, and the three private majors, ICICI Bank, HDFC Bank, and Kotak Bank, were in facing selling pressure. So they dragged the index lower, and we closed with a cuts of over a percentage point. But more importantly, the gap area of 7th and 8th July on the Bank Nifty is still open, which is a positive sign. While the index is facing resistance near 35,500, 35,600 zone, but the 35,000 is holding as of now. And if we hold 35,000, then we may continue to trade in this range of 600-700 point, wherein we hold 35,000 or 34,900 odd on the lower end, and 35,500, 35,600 may act as a resistance zone. But convincing close above 35,600 can bring about another sharp short covering rally, which can take the index over to 36,500 odd levels. Even on the institution front, on the cash segment, we saw FI had a net sell figure of 1565 crores, while DI had a small net buy figure of 140 crores. On the derivative front, what we saw is Nifty futures. I saw some short build-up to the tune of 2% with an addition of 0.24 million shares. So now the total outstanding position stands at 13.98 million shares. Even the PCR, I saw a sharp downtick, wherein it closed at 0.85 as compared to its previous close of 1.21. So it's a sharp downtick, while the option distribution still suggests that 16,000 and 16,300 should be the range for this derivative settlement, as 16,100 and 16,000 strikes saw some put addition, while 16,300 and 16,200 call did show some addition. So as per this data, 16,000, 16,300 should be the range for this weekly derivative settlement. While on the Bank Nifty, even Bank Nifty saw some bought of long liquidation yesterday, and now the total OI stands at 26.18 lakh shares as compared to previous of 28.62. That is reduction of 8.5% in total open interest. FI statistics in the derivative market, there are a huge net sell figure of 2815 in the index futures. Index option, there a net sell figure of 1555. Stock option, they are net stock futures, they are net sell figure of 1123 crores, and stock option, they had a small net buy figure of 171. So overall, it was a net sell figure of 5323 crores in the derivative market. While top 5 long additions were seen in Indus Towers, PI India, Concor, BHEL, while stock in short position was seen in Delta Corp, NMDC, JK Cement, Deepak Nitride, and Coforge. And the stock which is in FNO band for today's session is Delta Corp. And in the derivative report, we are given buy in Concor futures. We can buy in the range of 668 to 672. Stop can be placed at 656. Target is 698.
So that would be it from my end. I'll pass it over to Bhavesh sir for further research updates. Over to you, sir. Yeah, hi, good morning, everyone. So, first, HCL Tech reported results which were below expectations. Companies, even margins at 17% was below their guidance of 18 to 20%. And this margin was hit because of higher subcontracting costs, higher travel expenses, and even wage hikes. Going forward, the company aims to achieve now EBIT margin of 18 to 20% in FY 23. But revenue growth is expected to remain robust at 11%. So overall, weak results for HCL Tech. Second update is on steel prices. So some steel long product prices have gone up by rupees 300 to rupees 1200, but we don't think it can sustain for long, especially when the raw material coking coal prices are coming down, which are down by nearly 15 to 20% in the last 1 month itself. Overall, from the peak, it is down nearly 50%. So this is kind of positive, but as of now, because of this export duty thing, we are kind of neutral on the sector, and we await better entry points from a longer term perspective. Then on banks, so banks, ICRA has come out with a report where they say that banks will incur mark-to-market losses of 10,000 to 13,000 crores in Q1 FY23. Out of which public sector banks will suffer an MTM loss of 8 to 10,000 crores, and private sector may suffer between 2 to 3,000 crores. Expected growth in operating margin is around 11 to 12%, which will more than offset the MTM losses. So we'll see how results pan out. So that's it from me. Over to you, the team. Thank you, Bhavesh. Good morning, team. Brent crude has again come back below $100, and it is the second time it is coming. So very slowly crude is correcting, which is very positive for India. Now our inflation data came yesterday, but it is higher than the comfort zone of RBI. It was at 7%. But IAP data was a very positive surprise at 19.6%. And in IAP data, electricity was the biggest growth driver at 23.5%, manufacturing at 20.6%, and mining at 10.9%. Very important, manufacturing sector is seeing a huge growth. Now, when we visited few companies also, we heard that when they are expanding, if they want to do a automation, it is ABB or Siemens. And these two stocks are making all-time high on a regular basis. And I think any correction, if you buy, you will get 8 to 10% rally in these two stocks. And even Cummins is looking very good. Kirloskar Engines is looking good. KSP Pump is looking good. These are few companies where trading is always possible. And Mahindra, which is again an all-time high stock, if it corrects, you buy, you make some money. Pepsi, India has said it has clocked a double-digit revenue growth, which is positive for Varun Beverages, which is a Indian franchisee for Pepsi company. There is one interesting data, CPSC, that is central government PSU companies, their capex was 1,37,000 crores in the first 3 months. And this capex is led by Railways and National Highway Authority of India. And if we recollect in the budget, the government has allocated 7,50,000 crores for capex. And out of which 1 lakh crore state government has to spend. Balance, it is about 6 lakh crore. Defense is having 1,52,000 crores. In that, the spending has been far higher now compared to previous year. So that is something again very positive. There is one more news on residential property registration. Hyderabad, now June month saw almost 25% drop to 5,408 units, while the first quarter of this year, the registration has been higher by 9.1%. It is 17,074 units.
but we need to understand, the real estate rally. If you are looking at 3-4 years, we are at the start of the real estate rally. Real estate is the last to rally. So if you are a long-term investor, then you have very good opportunity to buy DLF, Kolte Patel, Loda, Godrej Properties, Oberoi Real Estate, Prestige. These are good companies. Even Suntech, after their numbers yesterday went up. So these are few stocks to notice. And if market is positive, then bank is one segment which will do very good. The worst of the asset quality is behind us. Yes, there will be some hit in the M2M margins, but private banks are looking very good. We like ICICI Bank, IndusInd Bank, Kotak Bank, HDFC, even City Union Bank. In that bracket we can add. Yesterday, I think the balance sheet of IDBI Bank also came. But these are few banking stock which will do very good. Even Canara Bank in PSU and SBI looks good for us. SW Solar came with the results. They reported a loss of 353 crores versus 76 crores. Revenue was higher by 1% at 1,206. Very bad results. So there should be some negative reaction for this. Ahluwalia contract. Now they secured 150 crore of construction order. Loda will invest about 500 million, that is 3,950 crores over 5 to 7 years on sustainable initiative across all projects. It aims to be net zero company, net zero carbon company. So this is something value added, where I don't think a major reaction is likely to be there. NMDC has cut prices of iron ore, so which is very negative. But now again, in one more news, they have said that NMDC is likely to explore iron ore and critical mining possibilities in Australia's Mount Bevan. And they are looking at lithium, copper, tungsten and gold also. So this is something positive. At 100 rupees, I think NMDC for an investor is a throwaway buy. But the cycle has to change. It will take 1-2 years. We have Mr. Brijesh, who has newly taken over the place of Miraj. So Brijesh will introduce himself, followed which Hitendra will take over. Brijesh, over to you. Good morning, everyone. My name is Brijesh. I'm there in the market for last 16-17 years. I joined IDBI on 11th of July. I'm looking at the technicals for the last 16-17 years, and this has been my hobby. Looking at the index and overall view and giving a clear picture on the market, talking of the sector specific. This is what I do like. And eventually, before coming to IDBI, I was working with Quantum Securities in institutional desk. There was heading for the banks and mutual funds, giving them the short to medium term view and the sector specific ideas. That is what I was doing earlier. So here, in place of Miraj, I will be taking the charge of things and taking the things forward. Thank you. And you have to repeat it in Hindi also. Yeah. गुड मॉर्निंग सभी लोगों. मेरा नाम ब्रिजेश है. मैं मार्केट में 16-17 साल से हूँ. आईडीबीआई कैपिटल ज्वाइन करने से पहले मैं क्वांटम सिक्योरिटीज में था, जहाँ पे मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल डेस्क को हेल्प करता था. वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स से, जिनको मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू देना था और उनको सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक पे मुझे व्यू कंटिन्यूस देना पड़ा. और यहाँ पे मैं अभी मिराज की जगह पे आया हूँ, तो अब मैं यहाँ पे टीम को हेड करूँगा और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है उसको आगे बढ़ाऊंगा. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. इस कॉल को हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं. कल हमने देखा HCL टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट है. रिजल्ट देखिएगा तो ओवरऑल सब्ड्यूड थे.
Q1 के मार्जिन देखेगा तो 17% है कि लोअर था 18 to 20% जो गाइडेड रेंज है। सेकेंडली इनका मार्जिन लोअर होने का इशू दो था, जो सब कंट्रोलिंग कॉस्ट था उसकी वजह से, हायर ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो रीजन था, और वेज हाइक्स की वजह से। थर्डली हम देखे जाए तो इनकी जो या इनने कंपनी ने कहा है कि वे जो लोअर एंड 18 to 20% एबिट, वे मार्जिन को कंटिन्यू रखेंगे FY23 के लिए। और लास्टली उन्होंने कहा कि वो ये रोबस्ट है 11.4% ग्रोथ के लिए, और इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो रोबस्ट रहेगी 11.4% और हेल्दी पाइपलाइंस के चलते। ओवरऑल ये रिजल्ट सबड्यूड है, तो हमारी इसके ऊपर होल्ड रेटिंग है टारगेट प्राइस 924 के साथ। स्टील सेक्टर में एक अपडेट है, कल हमने देखा कि सम कुछ जो स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है उसके प्राइसेस 300 से 1200 पर टन के हिसाब से बढ़ गए हैं, पर हमें लगता है कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। और कोकिंग कोल प्राइसेस है वो भी 15 to 20% देखेंगे तो लास्ट डाउन है, और अगर हम मंथली देखेंगे तो 50% ओवरऑल डाउन है। सो ये है। बैंक्स की एक कल रिपोर्ट आई है इकरा से, उन्होंने कहा कि बैंक्स को बेसिकली एक M2M लॉस लग सकता है राइजिंग यील्ड के चलते, कि 10 से 13 हजार करोड़ तक का लॉस उन्होंने अनुमान किया है निकल सकता है। सेकेंडली हम देखेंगे तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो लॉस होगा PSB बैंक्स को होगा, जो कि 8 से 10 हजार करोड़ का रहेगा। और प्राइवेट बैंक्स में देखा जाए तो सफर जो लॉस है उनको 2500 से 3000 करोड़ के आसपास तक रह सकता है। बट ये लॉस ऑफसेट भी होगा, क्योंकि जो इनकी ग्रोथ है वो 11 से 12% के आसपास ग्रो हो रही है, तो इसके चलते ये जो लॉसेस है वो ऑफसेट हो सकते हैं। थर्डली हम देखेंगे जब कल ब्रेंट क्रूड है जो 100 के नीचे आ गया है, जो कि पॉजिटिव है इंडिया के लिए, और जो हमारे इन्फ्लेशन है वो जो कि 7% के ऊपर अटका हुआ है, तो उसको भी वो हेल्प कर सकता है। और हम चाहेंगे कि ब्रेंट क्रूड और नीचे आ जाए, 80-70 के आसपास लेवल जो रहेंगे वो बहुत ही बेटर रहेंगे। सेकेंडली हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की IIP डेटा है, IIP डेटा 19.6% का दिखा है, जो कि एक सरप्राइज है। सबसे इसमें अच्छा है जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में देखा जाए सबसे जंप देखा गया 23% का, मैन्युफैक्चरिंग में 20.6% का, और माइनिंग में देखा जाए तो 10.9% का। मैन्युफैक्चरिंग में हमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेड बाय ऑटोमेशन है, और ABB सीमेंट्स को मेजरली ऑर्डर जा रहा है, और हम देख भी रहे हैं ABB सीमेंट्स ऑल टाइम हाई जैसे मतलब मीन्स नए हाई लगा रहे हैं ऐसे मार्केट में भी, और रैली कर रहे हैं। इसमें कमेंट्स भी हमें अच्छा लग रहा है। ओवरऑल हम अगर इसी सेगमेंट में देखेंगे तो किर्लोस्कर फर्म्स पे भी हमें फोकस करना चाहिए, KSP फर्म्स पे भी फोकस करना चाहिए, महिंद्रा महिंद्रा जो कि ऑल टाइम हाई पे है। अगर यहाँ से 8 से 10% के नीचे के आसपास हमें करेक्शन या जैसे बोलते प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, तो हमें इसे एड ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये चलते आगे हमें जैसे मार्केट रिकवर होगा तो हमें अच्छी इस पे रैली दिख सकती है। सेकेंडली देखेंगे पेप्सी ने कहा है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल हो गया है, सो ये कि पॉजिटिव रहेगा वन बेवरेज की। वन बेवरेज पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि इनकी बॉटलिंग प्लांट है पेप्सी की पूरी वही संभालती है। थर्डली हम देखेंगे तो CPSE जो है रेलवेज के जो कि 1.37 लाख करोड़ अलॉट किया गया है, NHI ने टोटल 7.5 लाख करोड़ है, तो उसमें से 6.5 लाख करोड़ डिफेंस के लिए है, तो स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ स्पेंड करना है ओवरऑल, सो एक ये रहेगा। थर्डली हम देखेंगे तो हैदराबाद की जो जून मंथ का जो सेल्स है वो 5400 यूनिट्स है, जो कि 9.1% का हमें राइज देखा गया है। रियल एस्टेट रैली में हम देख रहे हैं अभी कि स्टार्ट ही हुआ है, और सब रियल एस्टेट रैली देखा जाए तो सबसे लेट रैली स्टार्ट होती दिखेगी है, तो इसमें जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिन्हें अच्छे स्टॉक से हमें अगर हमें अच्छे भाव पे मिलते हैं तो उसे होल्ड करना चाहिए, जैसे कि DLF हो गया, कोलते पाटिल हो गया, लोडा हो गया, सनटेक रियल्टी हो गया। और इसके साथ भी बैंक्स को भी अच्छी हमें लग रहा है यहाँ से एक एसेट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हो चुकी है, मार्जिन भी ठीक ठाक है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखा जाए तो ICICI बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, सिटी यूनियन बैंक में भी हम इसे ऐड कर सकते हैं, IDFC बैंक है, और अगर हम पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो कैनरा बैंक और SBI को भी हम देख सकते हैं। SWS सोलर ने भी कल रिजल्ट देखे, रिजल्ट बेहद ही खराब थे, लॉस देखा गया 350 करोड़ का, जबकि उन्होंने 76 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया, रेवेन्यू नियरली 1% का ग्रोथ देखा गया, जो कि 12 से 6 करोड़ का है, तो एक नेगेटिव रिएक्शन दिख सकता है। अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को एक 1050 करोड़ का ऑर्डर मिला गया है, सो एक पॉजिटिव है। लोढ़ा ने भी कहा कि वो 350 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, और भी कार्बन न्यूट्रल है जो है उसके ऊपर भी प्रोग्रेस करना चाहेंगे। NMDC ने कल एक अपनी आयरन और प्राइस को कट किया है, जो कि सेगमेंटली नेगेटिव है। सेकेंडली NMDC देख रहे तो वो ऑस्ट्रेलिया की माइंस में वो और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, गोल्ड हो गया, जो वहाँ की माइंस है उसके ऊपर। सो NMDC 100 रुपए के भाव में एक थ्रो अवे भाव में प्राइस मिल रहा है, अगर हमें इस भाव पे या इसके नीचे के भाव में भी हमें मिलता है तो हमें इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। So that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning call. You may now disconnect.